the percentage completion was 95% and 13%. So this will be affected a bit, but we will try to salvage it as much as possible. Sir, you could see the photographs of inlet works. This is before the flood. You could see both the tunnels and during and after the flood. Tunnel 1 is completely submerged, you can't see that. And similarly, tunnel 2, except for about 3 to 4 meters, this tunnel 2 was submerged. And this is the protection dike. This was overtopped and washed out. When I came on Saturday together with Secretary Water, this was the state in which we saw both the tunnels. And here you could see the outlet works. The same diversion tunnels as they drain out into the river. This was their state before flood, and this is the state of flood. And you could see, sir, these are the shuttering and form work structures. They were closer to inlet, some of them. They have been washed away out. These are the images of Munda and the middle three spans have been. And in the larger interest of the country, because Bhavda has the capacity, we have asked the KP government that we are willing to help you in its rehabilitation, if there are capacity issues with the KP government. This I have stated earlier. We would have been able to prevent the floods and damages in the tune of billions of rupees if Mohmand dam was in place. So what's the way forward? First of all, we will simultaneously restore dikes at outlet and inlet. We'll carry out inspection, evaluation and restoration work. We will have certain outlet works to execute and certain works at the inlet. And we have asked our contractor and consultant for a recovery plan. Hopefully, I think in about 15 days' time, this is my initial assessment, we will put extra resources to dewater these tunnels and prepare a recovery plan. Hopefully, sir, dry season is arriving and we will make maximum effort to utilize this dry period. My contractor and consultants, sir, have assured us, and I have directed them to find 25th hour to complete the restoration work as soon as possible. And inshallah, sir, we will be able to mitigate much of the effects. And at the end, sir, I wish to thank you for your presence here. It means a lot to us, and thank you for the continued support that we expect in the months and years to come. Thank you, sir, if you have any questions. Thank you. Rijan sir, thank you very much for this presentation, and it's a matter of it's a matter of great concern for all of us that hydel power project, which was conceived, planned, and put into implementation, has suffered a major setback. Even though it's the loss is about dikes and inlet and outlet tunnels, and the main dam work is still going on intact, but that will obviously hamper our progress and the timelines. We are all very aware that Pakistan is facing a very acute problem of expensive power generation because of very expensive import of fuel from abroad, and then generating
expensive power and then subsidizing it to the common man. So it's a three-tier loss of our national exchequer. A, importing very expensive oil. B, generating very expensive electricity. And C, then reducing the cost of generation and providing subsidy to the common man. These hydropower projects and other sources of power like solar and wind are our future, and we must immediately shift towards that direction. Otherwise our economy will continue bleeding because of these billions of dollars we have to spend annually to import our requirements. Now this dam which is being built by combination of Chinese and Pakistani partners is a very important dam, able to generate 800 megawatts, ultimately providing additional water for irrigation, and of course also contributing in controlling flash floods. This damage to this system is a matter of great concern, and as you have said that you will find the 25th hour to complete the job as early as possible. It's very reassuring, and that's how we should be talking, and that's how we should be doing our actions and implementing our way forward. But equally important is Jan Saab to investigate the matter as to how it has happened. I mean, I'm sure you are an engineer yourself, and I've known you for many years. You're a doer, no doubt about it. As head of NC and then engineering chief, I believe. So I think with your background as an engineer and our national interest demands that we need to look into this. कि ऐसा हुआ क्यों? दुनिया भर में डैम बनते हैं और ये प्रोटेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं कि इस तरह के हादसे खुदा न खास्ता हो जाए तो उसका प्रोटेक्शन हमने किया है, वो बड़ा ज़रूरी है. अभी as you know, you've just taken over, I know, as Chairman of I wish you best of luck. अभी पीछे नीलम झेलम में बड़ा सेटबैक हुआ है before you took over. फिर गुद्दू में as you know, वहाँ पर भी not your domain but वहाँ पर भी प्रॉब्लम हुआ. तो ये उस पर मैंने ऑर्डर्स दिए थे. अभी सेक्रेटरी is here. I would like to also ask him कि एक इंडिपेंडेंट सर्वे इंटरनेशनल सर्वेस अपॉइंट किए जाएं एज अ थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेटर्स, ताकि पता चले कि क्यों ऐसा हुआ नीलम झेलम में और आज यहाँ पर यह हादसा हुआ, क्यों हुआ, ताकि आइंदा के लिए इसकी रोकथाम की जाए और आइंदा के लिए दोबारा never again such things should happen. So I'd be very grateful if you could kindly, take up these matters simultaneously. And I have no doubts with a very competent secretary and a very accomplished, army officer, you will combine your efforts together to complete this job as soon as possible and compensate for the lost time, by finding 25th hour. Thank you very much. Thank you, sir. Once again, thank you for. भाई आपको बात करेंगे. शहबाज
शहबाज शरीफ इस वक्त मोहम्मद डैम साइट पर मौजूद हैं, जहां पर वज़ीर आज़म को मोहम्मद डैम के हवाले से ब्रीफ किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि मौजूदा वक्त में डैमों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस वक्त पाकिस्तान महंगा तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से बिजली भी महंगी हुई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त बिजली के हुसूल में बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बिजली की पैदावार का सस्ता जरिया हाइड्रल पावर ही हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हाइड्रल पावर मंसूबे हमारा मुस्तकबिल हैं। यकीनन पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बनने वाला ये डैम बहुत अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को मोहम्मद डैम के हवाले मैंने पहले भी बताया था सर, आपकी हिदायत थी तो उन्हीं को हमने दे दिया। जो डायग्नोस्टिक था सर, उस पर हमने इनिशियली कोशिश की कि हमें कोई फॉर्म मिल जाए, तो हमने 14 फॉर्म्स को सर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए भेजा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर्म नहीं मिल सकी सर। तो वो अब हमने सर इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स नीलम जेलम हाइड्रो पावर कंपनी ने सर कोई 14 कंसल्टेंट्स है, उनका कंसोर्शियम बना के सर वो आपके नोट फॉर इंफॉर्मेशन में भेज दूँगा। उसमें हर जो फील्ड है, टनलिंग है, जो रॉक वर्क है, सबके हमने स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल उठा लिए हैं सर। उनके वो TORs आपको मैंने दिखाए थे, बट आपने सबसिक्वेंटली कहा था कि मिनिस्ट्रियल कमेटी से वेट हो जाएं, वो वेट हो गए हैं। और उन्हीं TORs के साथ सर ये दोनों काम साइमल्टेनियसली हो गए हैं, डायग्नोस्टिक और वर्क जो है वो इकट्ठी की। तो अभी आपने अपॉइंट करनी है सर? वो फाइनल हो गए जी, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने सिर्फ साइन करना है, वो अब हो जाएगा। हमने सिर्फ मिनिस्ट्रियल कमेटी से उसको वेट करना था, बिकॉज इनिशियल डिसीजन फॉर्म्स का वो वेटिंग हो गई है सर। लास्ट वीक हमने ऑनलाइन मीटिंग कर दी थी, मिनिस्टर्स अवेलेबल हो गए थे, वो सारे फैसले हो गए। उसको आप उसको किक स्टार्ट करें सर, उसको। बिल्कुल हो जाएगा। मैं आपको नोट फॉर PM भेजूंगा अभी। तो एनी फ्रॉम द चाइनीज साइड दे वांट टू से समथिंग? सर प्रोजेक्ट जो मैनेजर है वो भी है सर, और कंसल्टेंट्स भी हैं। बुलाएं दोनों जी को, प्लीज, दोनों को बुलाएं। why don't you come forward? And also from the consultant side, if Max, if you could come forward, please. Good afternoon, sir. Yeah, 你好，你好。你好。 Uh, Why this happened? absolutely, this is a unforeseeable condition, and in my opinion, the unexpected flood and overall our control criteria. This is the happening, the reason, main reasons in our engineering experience. And as you know, for this, Vinegar River, during the flood, this especially this season, this flood is almost 2.5 times of the designed criteria for protection. According to our information and the chairman reported for the water flow during the flood, that is the main reason affected this project and the collapse of this tunnel. In this, in my opinion. Yes, if you look at the flood that we had come through under Headworks and the project itself, it was around a 1 in 475 year return period. And considering that the overall diversion scheme itself is designed for a 1 in 100 year flood, while we build the main dam, this is unprecedented. So with the design of the diversion scheme being constructed, it was being constructed for a 1 in 100, but during the temporary condition for the actual building of the coffer dam itself, the return period is less than that. So, by how much time do you think the project will suffer in terms of delay? Because it's important to understand that cents and dollars are very important for us, obviously, but more important is to provide, idle power to the people, to the industry, to agriculture, and to that extent, 800 megawatts will be able to save import of fuel, very, very expensive fuel. B, it'll, strengthen our economy. C, provide water for irrigation, etc. These are the
colossal losses which I foresee, and I'm very concerned. So we need to expedite, and as Jim Wapka has just said, that he will do his best. Jan Sajat Ghani is a doer, but I will request you and your team and all of you that, well, it has happened, investigation will take place, but let us stand up and accept the challenge and move forward. Thank you. नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मोहम्मद डैम साइट पर मौजूद थे। यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म को डैम के हवाले से डैम पर जारी काम की तेज़ रफ्तारी से मुतालिक आगाह किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को आगाह किया गया कि मोहम्मद डैम की तामीर का मुकम्मल दौरानिया 6 साल है और उनको पाकिस्तानी भाइयों से, इंजीनियर्स से और जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, कि ये बहुत बड़ा एक नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त मोहम्मद डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की साइट पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ गुफ्तगू भी कर रहे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि बिजली की पैदावार का सस्ता ज़रिया हाइड्रो पावर ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में डैमों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वज़ीर-ए-आज़म को इस डैम के हवाले से ब्रीफ भी किया गया है, जिसमें उनको बताया गया कि मोहम्मद डैम से 1.293 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश है। इस डैम से 18,233,000 एकड़ अराज़ी सैराब होगी। 2 टनल इब्तदाई तौर पर बनाए गए हैं, जिसके ज़रिए अराज़ी को सैराब किया जाएगा और साथ ही साथ 800 मेगावाट सस्ती बिजली का हुसूल भी मुमकिन हो सकेगा। आपको बताते चलें, वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा $100 पे आया है। ये अभी भी हमारी जो इस्तेताद उससे बहुत ज़्यादा है, बढ़ के है। ये कीमत किसी तौर भी पाकिस्तान की खजाने और पाकिस्तान की मईशत के लिए मुतहम्मल नहीं हो सकती। यकीनन हमें महंगी बिजली पैदा करनी पड़ रही है और फिर महंगी बिजली पैदा करके जो कंज्यूमर है उसको हम आगे सब्सिडाइज बिजली दे रहे हैं, जो कि फिर अरबों रुपए का जो खसारा हमारे खजाने में पड़ता है। और उसके बाद अब हमें, अगर हमने बचना है महंगी बिजली पैदा करने से, तो हमें शमसी तवानाई से बिजली पैदा करनी होगी। हमें विंड पावर उसको इस्तेमाल में लाना होगा। और ये जो अल्लाह ने हमें नेमतें अता की हैं, पन बिजली जो कि तेल के मुकाबले में सस्ती तेल की इंपोर्ट के ऊपर हम जो अरबों डॉलर खर्च करते हैं वो बच जाएंगे। सस्ती बिजली मुहैया होगी, पानी का ज़ख़ीरा होगा, फ्लैश फ्लड्स की उसकी रोकथाम यानी कदम बकदम होगी। तो ये सारी चीज़ें वाबस्ता हैं। हम जितने भी अपने हाइडल पार के जो हमारे जो पॉइंट्स हैं उनको हम पूरी तरह उससे मुस्तफ़ीद हों। अब अभी चंद महीने पहले नीलम झेलम के ऊपर एक बड़ा हादसा हुआ है और अब यहाँ पे ये डाइक्स जो हैं वो बह गई हैं। तो ये अल्लाह ताला को ऐसा मंजूर था, लेकिन हमें यकीनन इसकी तय में जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ नीलम झेलम पे भी और अब यहाँ पर मोहम्मद डैम पे। तो उसके लिए नीलम झेलम के लिए जिस तरह कि आपने सुना कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के लिए हमें फैसला किया है कि उसकी पूरी तय में जाए और एक इंडिपेंडेंट वर्टिकली इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी उसकी इन्वेस्टिगेशन। इसी तरीके से मैंने सेक्रेटरी साहब को गुजारिश की है कि बिल्कुल वही सिस्टम जो है वही मैकेनिज्म यहाँ पर आप रेप्लिकेट करें। मगर ये तो काम इंशाल्लाह होता रहेगा और एक शफाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है बतौर आपके भाई के खादिम के
के और चेयरमैन वापडा बैठे हैं, सेक्रेटरी बैठे हैं हमारे कासिम नियाज, और आप सब इंजीनियर्स बैठे हैं, कंसल्टेंट बैठे हैं, चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे भाई हैं, चीन पाकिस्तान का एक बेहतरीन दोस्त है और हमें उस दोस्ती के ऊपर बहुत एतमाद है, और पाकिस्तानी इसमें कंपनी है, तो बगैर इस बात के जाए वो तो इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स बता देंगे, मगर मुझे आप सबसे ये गुजारिश करनी है कि मेहरबानी करें, उठें, हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें, शबाना रोज़ मेहनत करें एंड फाइंड, जिस तरह जनरल साहब ने फरमाया, फाइंड द 25th आवर, यानी इसका मतलब ये है कि दिन रात शबाना रोज़ मेहनत करें और राउंड द क्लॉक काम हो और मेहनत करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने बेपाया फजल करम से जो नुकसान हुआ है उसको भी हम पूरा कर लेंगे, और ये डैम जो है जिस मुद्दत में मुकम्मल होना है उसी मुद्दत में मुकम्मल होगा, तो एक बहुत बड़ी तारीख लिखी जाएगी। आप सबको पाकिस्तान के अवाम दुआएं देंगे और झोलियाँ उठा के दुआएं देंगे, क्योंकि इसी में हमारी माश की बचत है, इसी में पाकिस्तानी कौम की खुशहाली और तरक्की का राज मुज़मिर है। मैं इन अल्फाज के साथ आपका एक मरतबा फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा और आपको यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ शाना मशाना खड़ी है। आप हिम्मत करें, कमर बांधें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको रास्ता दिखाएगा और ज़रूर ये लॉसेस उनसे हम रिकवर कर जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मोहम्मद डैम साइट के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सैलाब से डैमों के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि सैलाब से बेपनाह नुकसानात हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की मईशत अब इस बात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि महंगी बिजली पैदा की जाए। इस वक्त पाकिस्तान महंगा तेल खरीद रहा है, जिसकी वजह से बिजली भी महंगी है। उन्होंने कहा कि शमसी पावर का इस्तेमाल करना होगा और पन बिजली का हुसूल मुमकिन बनाना होगा। ये वक्त इस बात का मुतकाजी है कि इन डैम से इस्तेफादा किया जाए। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की भी इसी में मुज़मिर है। सैलाब की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे और अब बाकायदा खबरनामे का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों में होने वाले नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेने के लिए नौशहरा पहुंचे तो उन्हें इमदाद और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को बताया गया कि जिला नौशहरा में 77 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहां पर लोगों को ठहराया गया है और उन्हें खुराक और तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। ब्रीफिंग में बताया गया है कि सैलाब के बायस जिला के तीनों तहसीलों में फसलों और लाइफ स्टॉक को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह फौरी रेस्क्यू रिलीफ है, मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए।